Good afternoon, guys. Today is 30th of January. Let's start today's webinar and without any delay. Uh, we discuss the outlook for the next week. We have seen a significant fall in Nifty, Bank Nifty, and after that, we have also seen a bounce. Now, after this bounce, what we need to understand by looking at the global markets is this bounce going to sustain, or is this just a technical bounce and then again we are going down? So that will be the effort, okay, to understand, is the downside done? Should we start looking for longs, or is it just a technical bounce and now we should again look to short? Yeah, so that would be what be discussing today. Okay, so let's start with US markets first, the mother markets. Okay, कहाँ गया? हाँ जी. Let's start with the S&P 500 first. Yeah. So like if you see, this weekly chart, you see a good bounce that has happened from this demand zone. Yeah. Now, for anyone to go short, now this was what we discussed last time also. This is the target for our short, which has already been completed, and now you see a very good, strong bounce back. Plus, this being a demand zone, also there is no point going short now. Yeah, because very well this can continue on the upside. Okay, and this whole downside, it looks like it's completed. Okay, so now how to trade? Okay, so you will trade either on the highs above last week high. Okay, so if you see it going above the high of the last week, then that's where you look to go long. Okay, if it starts going below this demand zone or the low of last week, that's the only scenario we will again look to go short. But unless that happened, we are not short. Okay, so unflag all. Yeah, so now US looks positive. As of now, there is no bearish sentiment. Okay, now let's look at other US indices like Nasdaq. So again, Nasdaq, if you see, Nasdaq is not that clear, but still this is a very good reversal candle of the trend. Also, if you see 1 2 3 legs down is done, this is in the demand zone. So even this looks very good buy as of now, with the last week low as the stop loss. Yeah, so even this looks as a very good buy, very good buy, if you see. Okay, so again this becomes your stop. Okay, the last week low, if that goes, then we are looking for significantly lower levels. But as of now, looks like the correction in US market is done, and now we should start looking for an upside. Okay, let's look at Dow Jones. What Dow Jones is saying, same, very similar. So this is the target that we gave on the downside. It is done, completed. Now this also looks positive. So US market is looking positive. Okay, let's move to Europe. Let's see what is Europe saying. If you see DAX, again DAX, if you see correction and the target is already being met, the correction seems to be over. Okay, we have already touched on our target. So here again one should look for longs. Now since the stop loss is low, where you should go long? Either you should go long on the breakout over last week's high with a small stop loss, or near this low. So this also looks positive as of now. In fact, this I'll put it as an amber because not a very clear cut positive. It still can slide down a bit before it moves higher. Okay, UK 100, if you see, again a very good candle, but this is also not a candle where I look to buy. I just cause of volume you can put it to buy, but not a very clear cut buy. I'll put it again in the sideways to upwards. Yeah, top 50 European stocks, if you see, very similar. Yeah, again this will be, so Europe is looking sideways to upwards, not still you can say clear cut upwards.
Yeah. Now let's look at Asia. In Asia, what is Hang Seng doing? Hang Seng looks very bearish as of now. Okay, Hang Seng looks like the reversal has come in, but where will you go long or short? Only below this. Okay, so Hang Seng looks bearish, but will you go short right now? The stop loss becomes very big, so no, you will not. You look for a close below this or test of this and then going higher. So if you see a higher high, higher low, then you then in that case go higher. So it becomes a wait and watch. Okay, what is China doing? China is also, if you look at this particular chart, China looks like have reversed from this, looking good for another leg down, looks bearish as of now. Just remember one thing, China is at its demand zone. Just remember that. Okay, so if it closed below this, you see this move down. Okay, so China as of now looks bearish. Nikkei, let's see. So Nikkei also looks very bearish. So now Nikkei is one thing which kind of shows that the correction in Asia, if you see Nikkei, China, Hang Seng, it doesn't look like it is over. It's still continuing. So while Nasdaq and US have recovered, okay, US and Europe is also looks like will recover. Asia still continues to look bearish as of now. Yeah. Now let's look at dollar index. What is okay? So dollar looks very strong as of now. Looks very positive. Now in dollar, if you see, this is the channel that it is following, this trend line. Okay, as of now it looks positive, so it doesn't look good for developing economies and the liquid, and that's why you see China and Nikkei and Hang Seng looking bad. Yeah, while the US market is doing good. Yeah, because of the strong dollar as of now. Okay, if you see yields also look like have done and are just a minute, guys. So yields also look like they have made finally they reached the top and should continue to decline from here. Okay, unless and until they take out the recent top that they have made. So this is also not looking good. So because if yields are declining, that's something which is bad, because if yields decline, that means the demand is going up, right? That's why the cost is going up and the yield is declining. So that's also not good for equities. So we have kind of a conflicting view as of now. पूरा पूरा अगर देखो तो US looks strong, Europe looks needs one more week to give us clarity, while Asia clearly looks weak. Okay, dollar looks strong. So this is what we have as of now. Okay, now let's look at commodities. Okay, first let's look at gold. What is gold doing? Yeah, so gold as expected, this is the trend line that it is following, like we discussed last time. One more bounce in gold was what we are expecting. So मतलब समझ लो इस week के end तक या next week तक we should see this gold touching this trend line and then bouncing. So this also kind of indicates कि एक fall शायद और आ सकता है equities में, but we'll have to be very nimble footed. Okay, so gold for this week still looks negative. Okay, so this week we can expect market still to continue to go up. Okay, but this is not a place where I look to buy yet. Yeah, let there be a trend in the upward direction, we'll enter, then not right now. Okay, now let's look at crude, what crude is doing. Crude is also looking bullish. So again, like continuing with the trend of the also. For now, since crude is looking bullish, we'll focus also on crude related stocks and we'll see if we find any kind of opportunities. Metals like aluminium and all. So this is looking kind of the move on the upside is done. We can expect a good down move now. Let's look at the daily chart. Yes, so looks like the final top in aluminium is done and we can expect a down move. So metals will be something which will be looking to find opportunities for selling after their bump up. Copper भी देख लेते हैं. Yeah, copper में not much, sideways है अभी.
Okay, but you can say that एक दो हो गया, तीन आना चाहिए. Okay, but that having said that, it's not much of a trending down move. Okay, Jink अगर देखो, so again, like a kind of a double top, but not a very clear cut short. Okay, so metals are looking kind of weak. Okay, crude is looking strong. So that's the message. Forex देखते हैं थोड़ा. जापान देखो, तो जापान इंडेक्स वीक लग रहा था ऑब्वियसली, एंड सो इज इट्स करेंसी इज लुकिंग वीक करंटली. ओके, अब a divergence here, if you can see there is a divergence, right here. Just a minute, guys. So guys, in yen, if you see, you can clearly see there is a divergence here, right? ये जो fall हुआ था उसमें divergence. So there are high chances कि this becomes the first low of a higher high, higher low. Okay, so though it looks negative, you will not go short here. Okay, unless and until this low goes, you don't go short here, because it might be the end of this down move and now it should move higher. So looks like, even Asia might show reversals right now. So इसको अभी हम डालते हैं बुलिशनेस में ही, ठीक है. दो इट्स लुकिंग वेरी नेगेटिव, इनफैक्ट इसको वो कर देते हैं साइडवेज टू अपवर्ड्स. ओके, यूरो यूएसडी देखो, looking very negative. Yeah, continues to look very negative. Big down move looks like is coming. So Europe looks bad. So it means जो हम अभी साइडवेज बोल रहे थे, देख रहे हो, इसमें हो सकता है अभी एक और डिप आए. ओके, ये सब जो साइडवेज था इसमें एक डिप आए. यूएसडी आईएनआर देखो, क्लियरली लाइक एक्सपेक्टेड यहाँ से बुलिशनेस था, स्टिल लुक्स लाइक बुलिश. ओके, मंडे के लिए एक थोड़ा डेली चार्ट देख लेते हैं. हाँ, लुक्स बुलिश. ओके, स्टिल ओनली बिलो द लास्ट फ्राइडे का लो. You can expect it to go down. Unless that happens, it's very clearly following this trend line. Okay, so this kind of shows that continuous weakness in our market can continue. हो सकता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन डेली चार्ट है, ये थोड़ा और नीचे है, बैंक निफ्टी और बम्प अप करे, बट दैट माइट बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सेल. ओके, नाउ यूएसडी जीबीपी देखो, again if you see its chart looking clearly bearish. Okay, so Europe is clearly bearish, Asia is already bearish. Okay, so it's like Asia फर्स्ट नंबर पे यूएस चल रहा है जो ऑलरेडी रिवर्सल दे चुका है, एशिया सेकंड नंबर पे चल रहा है नियरिंग क्लोजर टू रिवर्सल, एंड यूरोप थर्ड नंबर पे चल रहा है. यूरोप में एक वीक और उसके बाद हो सकता है यू गेट दैट बुल रन कंटिन्यूइंग. ओके, so this is how the global scenario looks like. Okay, अब क्या करते हैं, now let's start focusing on our domestic indices. ठीक है, सो गाइस चलो देखते हैं, ठीक है, कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी सेक्टर्स में क्या चल रहा है. सो अगर निफ्टी देखते हैं, लेट मी रिमूव ड्राइंग्स.
let me keep this one because ये blue वाला मेरा target था. Let me keep this one. Yeah. Now अब देखो ये फिलहाल तो it looks negative. अगर वीकली चार्ट पे देखो तो क्लियरली नेगेटिव है. Having said that, we should also acknowledge the fact that we have a demand zone over here, right? एक सपोर्ट है यहाँ पे. क्लियरली उस सपोर्ट ने थोड़ा काम किया. You have seen a bounce but not much of a bounce. ठीक है, थोड़ा अब इसको डेली चार्ट पे देखते हैं. ना अगर डेली चार्ट पे मैं देखूं, so on Nifty I see a clear cut rejection, right? ये ट्रेंड लाइन निफ्टी फॉलो कर रही थी, इससे इसने ब्रेकआउट हुआ और क्लियर कट रिजेक्शन दिया, विच मीन्स व्हाट कि दिस मंडे यू लुक टू सेल विथ अ स्टॉप अबव लास्ट फ्राइडे और लास्ट वीक का हाई. सो निफ्टी इज लुकिंग क्लियरली बेरिश एज ऑफ नाउ. द मोमेंट इट गोज बिलो द लो you will see a much faster move and then the targets of 16170 जो हमारा है that should be achieved. Okay, now बैंक निफ्टी देखो कहाँ गया. बैंक्स तो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखो ना, इट्स नॉट एज सिंपल एज निफ्टी. निफ्टी का चार्ट तो बड़ा सिंपल था. बैंक निफ्टी इज नॉट दैट सिंपल ऑफ अ चार्ट. ओके, बैंक निफ्टी में अगर देखो तो ये हमारा यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, राइट? ये फॉल स्टार्ट हुआ, यहाँ इसने पहली बार ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, डिड नॉट गो अप, फेल. ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो अगर आपके पास एक स्लाइट डिमांड जोन है विच वर्क हियर. ओके, दिस कैंडल शोड द रिवर्सल, तो वो रिवर्सल वर्क किया, ऊपर गया. अब लाइक आई ऑलवेज से मोस्टली दीज मूव्स आर ऑलवेज 3 वेव मूव्स, 1 2. सो अब देखो बैंक निफ्टी इज अ बिट डिफिकल्ट. ओके, लेट्स रिकॉग्नाइज द थिंग, इट्स नॉट वेरी क्लियर. 1 हो गया, लुक्स लाइक ये 2 और हो सकता है अभी 3 भी आए. सो इट कैन एक्चुअली गो अप एंड टेस्ट द टॉप. सो बट एट द सेम टाइम ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये जो आपका कैंडल फॉर्मेशन हुआ है यहाँ, it's a bearish candle formation. Okay, which means you can actually go and sell bank. Now since Nifty is positioned negatively, okay, Asia is looking negative, USD INR is looking positive, I will be more towards selling banks rather than buying. दोनों हो सकता है. Okay, but probability of बैंक निफ्टी फॉलिंग इज मोर, मे बी 90-10 की जगह 70-30 probability है, बट स्टिल probability इज नेगेटिव. ओके, जस्ट दैट सिंस बिकॉज यू सी सच अ बिग यू नो, इस वीक में अगर देखो तो इट ऑलमोस्ट जितना गिरा है उतना उसने कवर करके बीच में ही. ठीक है, तो बेसिकली कुछ हुआ नहीं. ओके, एंड ऑल्सो यू नो इट वॉज एन एक्सपायरी वीक, सो माइट बी कॉज ऑफ दैट. ओके, जहाँ ओपन हो वहीं खुला एंड देन यू कैन सी अ डाउन मूव. सो बैंक निफ्टी में द आइडिया शुड बी टू गो शॉर्ट विथ द हाई ऑफ लास्ट वीक. अ बेटर stop loss is this. Okay, if you can hedge, nothing like that, that's the best thing. You can hedge with the stop loss. Okay, 3800 ka, and then you can expect it to slide, okay, to the levels of around 30,900, that is 31,000 तक के लेवल तक we can expect it to slide. अब होता है नहीं होता है, that we'll know only in this week, but mostly chances it should. Why? Again, you can see this is the daily chart. If you see a good rejection from top. Okay, so you can sell bank nifty, keep last Friday ka high as your stop loss. Okay, better stop like I said will be this, but even you can keep this as a stop, sell it for a target minimum of 34,400. उसके नीचे गया तो सीधे 31,000 तक. ठीक है, so that's the view on bank nifty. So bank nifty is looking negative. Okay, and the idea should be to sell it. Okay, better to create a spread like I have taught you guys, right? So you can create a spread, ratio back spread, something like that.
Okay. Now let's look at the other big sector, finance. Very similar to बैंक निफ्टी. Yeah. ये ऑल्सो वेरी सिमिलर. अगर आप देखो इलियट वेव टर्म्स में 1 2 3 4 हो गया, 5 आना चाहिए. इसको भी देखो 1 2 3 4 हो गया, 5 आना चाहिए. ओके. अब अगर देखें अगर कितना हुआ है, ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस हो गया, विच काइंड ऑफ is what it shouldn't go well. So finance also looks clearly short. Candles are also not looking good. So this will also be a short. Okay, with last week high as your stop loss. Okay. और चलो नेक्स्ट सेक्टर क्या था हमारा, आईटी. क्या ही बोलना है इसमें. मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है. ये ट्रेंड लाइन गया तभी शॉर्ट था. ठीक है. दैट when we initiated the short, continue to remain short in this last week से अभी तक काफ़ी पैसे बन चुके हैं इसमें. Okay, people who want to enter also, they can also now enter with this last Friday का high as a stop. So this is clearly a short. Okay. Now ये आपके बड़े सेक्टर में एक और आता है ऑटो. ऑटो में भाई क्या चल रहा है. ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, वी वेंट शॉर्ट, नीचे आया, टेस्टेड, ऑलमोस्ट टेस्टेड द हाई. अगेन दिस इज ऑल्सो लुकिंग बैड. ओके, क्लियरली अ शॉर्ट. या क्लियरली अ शॉर्ट विथ अ. अब ना वीकली चार्ट पे अगर देखो तो ये कैंडल जो है ना, दो अ शॉर्ट इट्स अ ट्रेडिंग रेंज. ओके, सो अ सेफर पर्सन शुड try to sell near this, closer to the stop loss, or only once this low is broken. Okay, so depending on how you trade, you can trade autos. I would like to take some risk and sell with the last Friday's highs at the stop. Okay, but yeah, clearly a sell as of now. What is another big sector? FMCG. Again, कुछ बोलने की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है. क्लियरली अ शॉर्ट. या क्लियर कट शॉर्ट है. कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट ऑन FMCG. लास्ट वीक भी शॉर्ट थे, इस वीक भी शॉर्ट रहेंगे. ठीक है. मेटल्स लाइक आई डिस्कस्ड, ये ट्रेंड लाइन गई तभी से हमने शॉर्ट हैं. विल कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट. एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेटल्स विल टेस्ट दिस बिफोर गोइंग अप. ओके, सो मेटल्स ऑल्सो विल रिमेन शॉर्ट. ओके, एक सेक्टर अभी तक ऐसा नहीं दिखा जो पॉजिटिव दिख रहा है, रियलिटी. वीकली चार्ट पे देखो तो ओनली थिंग दैट यू कैन सी इज this is a demand zone. Okay, and a better way to go short will be only below this. Okay, low of last week. Okay, डेली चार्ट पे देखते हैं कि डू वी फाइंड. हाँ, डेली चार्ट पे वी कैन फाइंड एन एंट्री. वी कैन शॉर्ट विद द लास्ट फ्राइडे का हाई एट द स्टॉप लॉस. ओके, सो दैट विल गिव अस अ गुड रिस्क रिवॉर्ड. ओके, मीडिया में एक स्टॉक है जील, देख लेंगे. अगेन दिस ऑल्सो लुक्स वेरी नेगेटिव. ओके, फार्मा, don't think I need to say anything. So India overall looks totally negative. Nothing positive, not even one single index looks positive to me. Okay, so that's the view on this. Now let's go to the stocks. Give me 2 minutes. Okay, in 2 minutes I'll start discussing the stocks. Just give me 2 minutes.
So let's start with the stocks, guys. Okay. On IT we are already short. HCL Tech में अगर देखो तो टारगेट तो हो चुका है. Now a new short will be only below last week's low. So अगर last week low के नीचे जाता है, look to go short with a very small stop loss. Okay, I'm only giving short because the trend is still not broken. Okay, the trend is still down. Okay, looks like this will become a running flat, so we can expect it to still go down to somewhere like 1000 levels. Okay, but short is only below last week's low. So keep that. एक minute. ट्रिगर लगा लो इस पे. Okay. Then sell it if it goes below this. Coforge. I don't think he's still here. Also, there is any doubt. ठीक है, सेल है. अब इसमें एंट्री कैसे लेना है? Yeah, so this becomes your stop loss 4900. ठीक है, those who are already there, क्योंकि ये का कॉल कब से चल रही है, ऑलरेडी वी आर इन गुड मैसिव प्रॉफिट. ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू हियर. 4900 पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो. क्लोजिंग विल बी समवेयर आपका 15 मिनट क्लोजिंग या 5 मिनट क्लोजिंग पे डाल के रख लो. दैट विल बी योर स्टॉप लॉस. न्यू पीपल कैन ऑल्सो एंटर विद दिस स्टॉप लॉस. माइंडट्री, अगेन माइंडट्री में भी हमारा सेल चल रहा है. ऑलरेडी वी हैव मेड मैसिव मनी. ओके, सेम माइंडट्री वेरी सिमिलर, देख रहे हो, वेरी सिमिलर. अगेन माइंडट्री में ट्रेल करके यहाँ पे डाल लो अपना स्टॉप. 3923 3925 आपका स्टॉप हो गया. ओके, दोज हू वांट कैन अगेन सेल. न्यू पीपल कैन ऑल्सो सेल. न्यू एंट्रीज कैन बी मेड हियर. ठीक है, सेम LTI. दिस फ्राइडे का हाई बिकम्स योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. Okay, this becomes your trailing stop loss and you got to sell it. New people can also sell. Tech Mahindra continue. इसमें भी वही आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो. ठीक है, दिस इज़ तो श्योर शॉट. जिसको सेल करना है कर सकता है. ठीक है, इसमें लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा है. दैट कीप दैट इन माइंड, बट दिस इज़ श्योर शॉट. ओके, जस्ट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये अपने डिमांड जोन के काफ़ी करीब है. ओके, सो wherever you enter, this is your target. So unless your target is good, risk reward is good, don't enter. Okay, those who are already there, keep trailing. This is your target. आ जाएगा इस वीक में. Wipro, again trail your stop loss. Okay, to 572. टारगेट तो देखो कब का वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, 572 पे ट्रेल कर लो. न्यू पीपल कैन ऑल्सो एंटर. क्या यार, सब सेल है. सेम नौकरी देखो, अब नौकरी में बुकिंग करना स्टार्ट करो. प्रॉफिट नौकरी में प्रॉफिट बुकिंग करो. ठीक है, नौकरी में बुक योर प्रॉफिट्स. ओके, नौकरी बुक योर प्रॉफिट्स. जिसमें प्रॉफिट बुक करना है वो ये है नौकरी. ठीक है, मार्क्ड विद ब्लू. एम्फेसिस छोड़ दो. ठीक है, एम्फेसिस में इनफैक्ट इसमें भी शॉर्ट लिया जा सकता है लास्ट वीक के हाई को डाल के. ठीक है, so you can keep this short there also, but just remember it's not a very good trade. Okay, already kind of a double bottom is in place, can make a higher high and can start moving upwards now. Okay, so not a very good trade. I'll keep it a amber. LTTS, very good short you can take. In terms of risk reward it is good, but probability of success might be low. Okay, but yeah, you can take short in this. TCS, again TCS अगर देखो आप तो still you can take a short with last week फ्राइडे का हाई. ये आपका जो है लेवल है 3730 के आसपास, उसका स्टॉप रख के TCS कैन बी शॉर्टेड. और Oracle, कितना पैसा बनाओगे भाई. Oracle से निकलो अब. ठीक है, Oracle से निकलो. Oracle से अब हो गया Oracle का. इन्फी में अब नई एंट्री लेने का सोचते हैं, पुराना क्लोज करने का और नया लेने का. सो इन्फी में ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है 1660. अगर उसके नीचे जाता है आई लुक फॉर ए टारगेट ऑफ 1570 to 1530. ओके, सो इन्फी लुक टू शॉर्ट बिलो 1657.
Okay, below 1657 we'll look to short Infi. In fact, people can, who have the risk appetite, can short it with the stop loss of 1727 also. Those who are already short, just trail it here. So in IT we have guys made massive money, massive returns. Almost all IT stocks have given us a return of somewhere closer to 10 to 15%. Okay, and we were short in almost all of them. So IT has given massive returns. Okay, now is the time to either book. Those who want can take a second entry with the stops like I have mentioned. ठीक है. Metals. Vedanta guys, now is the time you guys look to buy it. Okay, look to buy Vedanta for your portfolio, not a trading call. Buy in a portfolio. National Aluminium, okay, is a sell with the high of 112 as your stop loss. Coal India, already we are short. Okay, this was the level where we had trailed, still close below it. Keep your stop loss at last week's high, can be still sold. Okay, सेल छोड़ दो यार, सेल को, ठीक है, सेल को छोड़ देते हैं. लुक्स वेरी नेगेटिव बट स्टिल अभी मतलब नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस इन सेल. एनएमडीसी भी छोड़ देते हैं. टाटा स्टील भी एज ऑफ नाउ छोड़ देते हैं इसको. देखो टाटा स्टील में ये आपका डिमांड जोन है, which is already it is there at its demand zone. So below 1050 we'll look to sell Tata Steel, but not yet. Okay, हिंडाल्को अगेन बहुत फंसाया इसने तो, ठीक है. बड़ी मुश्किल से हम लोग इसमें से निकले प्रॉफिटेबली. मैनी ऑफ यू ऑब्वियसली वर नॉट एबल टू, बट ठीक है, कोई बात नहीं. स्टिल आई विल नॉट advise you to go sell Hindalco, though it looks clearly a sell. Okay, but let's leave it because kind of gives a feeling of revenge trading. So let's leave it as of now. Also stop loss if you see is very big and just नीचे trend line है, so it's avoid as of now. But I set a trigger on this trend line. ये trend line अगर जाता है then I will definitely look to sell Hindalco then. Okay, हिंजिंग नियरली एट इट्स डिमांड जोन, छोड़ दो. JSW स्टील छोड़ दो, नॉट वेरी क्लियर. जिंदल छोड़ दो, ठीक है. जिंदल में वैसे देखो शॉर्ट हमने लिया था. ओके, स्टिल द शॉर्ट इज देयर. पीपल हु वांट कैन सेल. ओके, योर टारगेट वुड बी 343. रतन मनी वाज ऑलरेडी अगेन अनदर शॉर्ट विच वी हैड ऑलरेडी टेकन. कंटिन्यू रिमेनिंग शॉर्ट इन दैट. मॉइल छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें. अडानी में क्लियरली शॉर्ट था. दिस वाज द ट्रेंड लाइन. जब वो ब्रेक हुआ तो हमने शॉर्ट लिया था. कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट. पीपल हु वांट टू एंटर नाउ कैन एंटर अगेन विद द स्टॉप ऑफ 1750. 1750 के स्टॉप पे नई एंट्री भी ली जा सकती है फॉर ए टारगेट ऑफ 1600. ठीक है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट जस्ट सी इफ यू आर ओके विद दैट स्टॉप लॉस. APL अपोलो, लुक नाउ टू बुक द प्रॉफिट. ओके, लुक टू बुक द प्रॉफिट. इसमें आप क्लोज करो ट्रेड. वेल्सपन छोड़ देते हैं अभी, ठीक है. तो ये रहा हमारा मेटल सेक्टर. ओके, मेटल्स में मोस्टली ट्रेड्स आर कैरीड ट्रेड, सम आर देयर जो कि कंडीशनल हैं. न्यू ट्रेड्स आर नेशनल एल्यूमिनियम. Okay, and on Adani also you can make a new entry. Rest everything has been carried. Okay, APL Apollo now look to close. Autos में देखते हैं. Balkrishna Industry, continue holding your short position. Okay, target still continues to remain to 2100. Okay, your stop loss becomes Friday का high. Bharat Forge छोड़ दो, स्टॉप बड़ा है नियर इट्स सपोर्ट, सो इसको छोड़ देते हैं. MRF भी जैसे लास्ट वीक बोला था ऑलरेडी है शॉर्ट, बट आई आस्क्ड यू गाइस नॉट टू शॉर्ट इट बिकॉज इट्स अ बिग स्टॉक. ठीक है, लिक्विडिटी इशू होता है. बट इन फैक्ट स्टिल अगर कोई गया है शॉर्ट तो यू जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस नाउ.
and just trail your stop loss to Friday ka high. Okay, and it's a short still. Yeah, ट्यूब हमारा राजा। देखो, हमारा राजा में देख रहे हो आपका आ रहा है रिजल्ट, लेकिन वॉल्यूम्स हैव लाइक कंप्लीटली ड्राइड अप। ठीक है, सो लुक, इसमें SLM ऑर्डर डाल के ना सेल करना, अगर ये जो ट्रिगर पॉइंट डाला है 593 का, अगर वो जाता है तो ओके। सो इसको वेट एंड वॉच में डालो। M&M ऑल्सो लुक्स गुड टू सेल बट स्टॉप लॉस इज बिग, सो इसको वेट एंड वॉच में डालते हैं, कुछ बढ़िया मिलता है एंट्री तब विल सी। TVS मोटर, like we are already short in this, continue remaining short, target as expected 560 is our target. Okay, but no new entries in TVS and motor, just for old people, keep holding. Those who want can sell Bajaj Auto with Friday's high as your stop loss. It's a risky trade. Okay, mind you, it's a risky trade. It's not a safe one. I sure no. बॉस का टारगेट हो गया गाइस। ठीक है, इसको बुक करो, नया एंट्री लेंगे इस लाइन के नीचे। अशोक का भी टारगेट हो गया है। ठीक है, नई एंट्री भी वैसे ली जा सकती है अशोक लेन में 135 के स्टॉप के साथ। ओके, बट आई विल एडवाइज सिंस कॉज द लॉट साइज इज बिग, अवॉइड इट, बट या इट्स अ शॉर्ट। मारुति को वॉच लिस्ट में डालते हैं। लेट्स सी व्हाट मारुति इज डूइंग दिस वीक। गाइस, हीरो मोटर इज a सेल बिलो 2650। ओके, 2650 के नीचे ही ये सेल है। ठीक है, 2650 के नीचे जाए देन सेल इट, बिग टारगेट on हीरो मोटर। ओके, सो ऑटोज आर ऑल्सो डन। लेट्स सी बैंक्स। Almost we are short on almost all banks. Bank Nifty, we made good money here also. Okay, now what's next? So see, this is a corrective pattern sideways, but this corrective pattern has an upward kind of trend, which does not give me confidence to short HDFC Bank anymore. Okay, so now HDFC Bank will be a short only below this, and if it goes below this, जो वो बोला था ना बैंक निफ्टी में 31,000, that will come. Okay, so अगर HDFC बैंक में ये ट्रेंड लाइन जाता है तो समझो कि बैंक निफ्टी में 31,000 आता है। ओके, सो इसको वेट एंड वॉच में डालते हैं अभी एज ऑफ नाउ। एक्सेस क्या लग रहा है एक्सेस में? एक्सेस में अगर देखें so again this is a channel, and for this week it looks weak, looks like अब वो नीचे आना चाहिए। so see, this is not a good shot that I am giving एक्सिस बैंक में। ये ज़बरदस्ती का एक तरह से शॉट है, अपॉर्चुनिस्टिक शॉट है, रिस्क रिवॉर्ड वाला शॉट है। ओके,
सो 784 का स्टॉप डाल के एक्सेस को शॉर्ट किया जा सकता है, बट नोट दैट दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड शॉट. देर आर मच बेटर ट्रेड्स जो पहले हमने डिस्कस किया है. दिस इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी शॉट. अगर आपको लेना है तो आई से प्रेफर करेंगे कि पुट ऑप्शन खरीद के लो ट्रेड इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्यूचर्स. कोटक लुक्स वीक. ओके, कोटक, बट देख रहे हो सारे बैंक्स ऐसा ही कैंडल, जैसे बैंक निफ्टी में था ऐसा ही रहेगा, राइट, जितने बड़े बैंक्स हैं. सो बैंक्स को एक्चुअली अवॉइड करते हैं शॉर्ट करना. बैंक निफ्टी में तो वैसे ही शॉर्ट हैं, ठीक है, तो बैंक्स को अवॉइड करते हैं शॉर्ट करना. हिंदुस्तान का भी हो ही गया, देखो टारगेट इज़ ऑलमोस्ट डन. सो अगेन इसमें प्रॉफिट बुक करना. आरबीएल बैंक, इसमें भी अभी फ़िलहाल कुछ नहीं. बंधन नथिंग. पीएनबी ना. फेड बैंक नथिंग. आईसीआईसीआई इज अ शॉर्ट. Good short. Okay, yeah, ICICI is a good shot. With Friday ka high as your stop loss, this is a good shot. Bank of Baroda, very good shot. Must sell. Bank of Baroda is a must sell. Please sell it. बैंक ऑफ बड़ौदा प्लीज़ सेल इट. 106 का स्टॉप लॉस डाल के बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल मारो भाई, पक्का सेल करो बिना डरे. SBIN is a short below last week's low. So this is banks, guys. Okay, Bank of Baroda, don't miss it, please sell it. Pharma. So like we discussed last week, pharma looks like a sector which is again going to underperform for next 3-4 years. Okay, I hope none of you are in any kind of pharma stocks. Don't be there, they will not perform, believe me. Okay, in fact there are two good stocks, Lal Path Lab and Apollo Hospital, but when the whole sector is going to perform worse, it's better to look for sectors which are performing good and get into stocks in those sectors instead of a good stock in a worse sector, right? That will help you to tilt the odds in your favor. So pharma avoid. Dr. Reddy looks very negative. Might this can work, this demand zone, but we never know. So avoid it as of now. So guys, Lupin is a very spectacular trap on the long side. You can go ahead and short it. The only thing is कि risk reward wise it's not very good. 1:1 का ही risk reward है. So that's having said that, it's a short. Now the decision is up to you. You want to short it or you just want to leave it. Oro Pharma was a clear-cut shot. Okay, time to see if you are a risky trader. Continue safe ones. Book your profits. Same with Sun Pharma. I'll avoid this sector actually. Though we are short at Torrent Pharma, we are massively short given good return already.
ठीक है, अब इसमें डेली चार्ट में जाओ, तुम्हें दिखेगा ये लास्ट डे वाला डाउन मूव, कीप होल्डिंग इफ यू वांट टू, ओके। और यू कैन ऑल्सो लुक टू बुक लास्ट फ्राइडे का जो आपका हाई था, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लो, रखे रहो। लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू गो टू 2400 लेवल्स, ओके। अपोलो हॉस्पिटल, let me see, yeah, so Apollo hospital may also look to now exit, book your profits, okay. दिविज लैब में ट्रेल करो स्टॉप्स, नई एंट्री भी पीपल कैन टेक, ओके, इट्स अ सेल। Alchem also the same thing, you know, just trail your stop, continue holding it। टारगेट है हमारा 3260, आ जाएगा इस वीक में। चलो भाई, अब FMCG पे आते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है इसमें भी बहुत पैसा बना है। अच्छा, तो ACC में लास्ट ये था, स्टॉप डाल के हमने सेल किया था, गुड। नाउ दिस जस्ट ट्रेल योर स्टॉप टू दिस, ठीक है। अब इस पे ट्रेल कर लो, ओके, स्टे शॉर्ट। अगर वो जाता है ट्रेलिंग स्टॉप तो निकलने का, न्यू पीपल कैन ऑल्सो एंटर। Ultratech Cement, again the same thing, you can keep this high as your stop loss, sell it for a target closer to somewhere around 6600 6700, better to buy it with a put option rather than selling futures just because it is near a demand zone, okay, but that's a sell। Ramco, अगेन सेल, कितना सेल करोगे। बर्जर ऑल्सो, ठीक है, यू कैन कीप दिस 740 का स्टॉप, यू कैन गो अहेड सेल बर्जर पेंट। 740 का स्टॉप डाल के बर्जर पेंट को सेल कर दो। श्री सीमेंट, सब में वही, देखो सेम, सबका अर्निंग आने वाला है, सब में सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं इसमें अलग अलग क्या ही बताऊँ। सेम, ठीक है, दिस इज योर स्टॉप, सेल इट। ब्रिटानिया, अगेन सेल इट। स्टॉप इज दिस, बस वही देख लो, स्टॉप बड़ा है, 1:1 है, नॉट अ वेरी गुड ट्रेड। गोदरेज CP, ऑलरेडी वी आर शॉर्ट, नाउ ट्रेल योर स्टॉप लॉस, ठीक है, कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट। I'm just literally tired, everything is sell। So guys, market is clearly looking very negative। UPL also, one can take a new short, stop at 806। सेम कहानी। Now it's only about finding the best places to sell तो सभी हैं ऑलमोस्ट। हैवेल्स, अगेन हैवेल्स में बुक कर लो यार, अब प्रॉफिट बहुत हो गया हैवेल्स में, यहाँ से हमने सेल किया था, ठीक है। सो लुक टू बुक योर प्रॉफिट्स और ट्रेल इट टू 1176, ओके, बट आई विल बी बुकिंग बिकॉज आई वांट टू फ्री अप सम कैश, ओके। सबको रखे रहो, अचानक से रिवर्सल हो गया तो सब में प्रॉफिट कम हो जाता, तो आई विल बी बुकिंग हैवेल्स। So ITC is, guy, you can go ahead and buy it for your portfolio now, ITC, okay, but 210 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ITC you can go ahead and buy
210 will be our stop loss. Voltas also look to book your profits now. Okay, near its demand zone, that's why look to book your profits. Pidilite one can take new short also. 25-15 का स्टॉप डाल के नया शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है Pidilite में. Colgate में सेम कहानी है, कर खुद से करो अब. McDowell भी सेम, कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट. Okay, just trail your stop to Friday high. UBL guys, note that it has bounced from this demand zone. This is the demand zone, right? Clearly you can see it has bounced from this area, so unless and until it goes below this, just keep it in wait and watch. Nestle also is a sell. Last Friday high as a stop. Page Industries is sell below this, buy above this. Okay, so buy above this, sell below this. इस रेंज में कुछ नहीं करना है पेज को, so इसको वेट एंड वॉच में डालो, दोनों जगह ट्रिगर लगाओ. ठीक है, बुक करो, इसमें प्रॉफिट निकालो. बाटा इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग से पहले. ओके, लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट देयर इज ए सप्लाई जोन ऑल्सो. सो बाटा में अब देखो थोड़ा कॉशियस रहना. इट्स नॉट अ ट्रेड फॉर एवरीवन. ओके, 2100 के ऊपर बाई रहेगा. ठीक है, और 2050 के नीचे सेल रहेगा. सो इसको ट्रिगर डालिए. सबके लिए नहीं है, बिकॉज देयर विल बी बिग वोलेटिलिटी. रिजल्ट इसका आ रहा है, सो अकॉर्डिंगली ट्रेड. मीडिया में झील, वी बॉट झील एट 270. वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट. ओके, एंड दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट नाउ. ओके, नाउ ट्रेडिंग के लिए अभी फ़िलहाल झील इज़ अगेन लुकिंग गुड टू बी सोल्ड 293 के स्टॉप के साथ. ओके, बट आई से कि लेट्स लीव इट एज ऑफ नाउ. ओके, लेट्स लीव इट एज ऑफ नाउ. ओके, अगेन इफ यू वांट बाय सम पुट ऑप्शन. ओके, बट डोंट unnecessarily sell this one. Okay, we have much better trades जिसमें better risk reward है. सेम PVR देखो, PVR is a sell with 1638 का stop. Okay, so if your risk permits you, go ahead and sell this one. Just give me a minute guys, I need some water. चलो रियलिटी में आते हैं. सो ओवरऑल लाइक डिस्कस्ड, पहले से शॉर्ट हैं, ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस. स्टिल अ शॉर्ट. IB real, again, you know, safe traders look to book. Godrej property, again safe traders look to book massive profit again here. Look to book those who can take some risk. Trail, even if you can take this risk, you can again go short here. Okay, but safe people try and book it now. DLF again देखो, ये आपका डिमांड जोन है. क्लियरली
So again, it's not a very good risk reward trade. Okay, so again, book profit. Okay, jo already is good money, it is giving book profit in that. Suntech, you can go ahead, sell it with this stop 525 के stop के साथ Suntech could be sold. L&T continue to remain short, just trail your stop loss. ठीक है, this is your trailing stop 1950 का. ठीक है, continue to remain short. हेमिस्फीयर छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं करना है. फिनिक्स में कुछ नहीं करना है. शोभा में कुछ नहीं करना है. प्रेस्टीज में कुछ नहीं करना है. ठीक है. फाइनेंशियल्स, पीएफसी कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट, जस्ट ट्रेल टू फ्राइडे हाई. एसबीआई लाइफ कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट, ट्रेल टू फ्राइडे हाई. बताओ, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर ट्रेड. पीएल में देखो आप इसके डिमांड जोन के पास हो, बेटर टू जस्ट ट्रेल. ओके, बस ट्रेल कर लो, नए शॉर्ट पोजीशंस मत लो. ओके, बुक प्रॉफिट्स इन पीएल. एचडीएफसी छोड़ दो, एचडीएफसी एएमसी छोड़ दो. In fact, HDFC AMC you can again go short. HDFC AMC में या 22-55 का स्टॉप रख के फिर से शॉर्ट जा सकते हो. HDFC Life, very similar situation, but it is in demand zone. Okay, but still, like if you can take this risk, it's a very good trade. You can again go short on this. And guys, नया शॉर्ट तभी लो जब पुराना प्रॉफिट निकालो, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी टू लुक एट सो मेनी ट्रेड्स. ठीक है. REC, L&T फाइनेंस छोड़ दो. L&T फाइनेंस भी, L&T फाइनेंस में प्रॉफिट भी बुक करो. श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ऑलरेडी वी हैव बुक प्रॉफिट्स, लेट्स लीव इट. Bajaj Finserv, oh my goodness, still, see this is your stop in Bajaj Finserv, but new short position only below 15,000, 15,000 के नीचे नया शॉर्ट. सेम बजाज फाइनेंस, ये आपका स्टॉप. ठीक है, जहाँ से आप शॉर्ट ले सकते. वेरी सिमिलर इन एवरीथिंग. सो चोला गाइस, देखो ये आपका एक डबल टॉप भी हो गया, ये ट्रेंड लाइन हो गई, बट यहाँ से अभी सपोर्ट है. यहाँ पे ट्रैप तो उसने किया है. सो you can look to go short on the break of this trend line. A more safe trader can wait for this to break and then go short. Okay, so conditional short है ये भी, ध्यान देके जैसे ही conditions meet हो you can go short. Granules, nothing. Lal Pathlab, again Lal Pathlab, like I said, it's better to be in a good stock in a good sector rather than a good stock in a bad sector. So though this stock is good, sector is bad, and that's why if those who are short, just trail it. Okay, remain short in it.
अंबुजा में प्रॉफिट बुक करो भाई. So MGL, I'm just waiting for its correction to get over. No trade as of now. Same with IGL. Also, I'm waiting for its correction to get over to go long in them. Okay, both of them are gonna give me a good return. As of now, nothing. इनको watch list में डाल देते हैं by the way. Okay. Indigo. Indigo में already short हैं. Continue to remain short. Okay, those who want can even look to book profit. सो गाइस, इंडिगो में प्रॉफिट बुक करो. ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट हो चुका है. बुक इन द प्रॉफिट. MFSL नथिंग. पाई अगेन कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट इन दिस. बहुत मैसिव प्रॉफिट पाई इंडस्ट्रीज में चल रहा है. ठीक है, कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट. ओके, इसमें बस ट्रेल कर लो. कहाँ ट्रेल करना है आपको? बहुत छोटा ट्रेलिंग है आपका, दैट इज़ यहाँ पे. जस्ट ट्रेल करके रखो इसको. ठीक है, पाई को. Massive gains this week. Petronet nothing. Gujarat Gas nothing. Pfizer again start दे सकता था लेकिन हमने लिया नहीं था इसमें. Torrent Power में नहीं. दीपक. ट्रेंड इज लुकिंग गुड नया शॉट लेने के लिए. या तो गाइस, ट्रेंड पे एक ट्रिगर लगा के रखो. 1990 990 के नीचे जाए तो शॉट लेंगे. हाँ, आरती में ट्रेल कर लो. गाइस बहुत सारे हैं. आई थिंक इफ वी शुड नाउ एंड दिस. नो एंड टू टेकिंग शॉर्ट पोजीशंस. ओके, Reliance now will be a short only below 2300. Okay. Can Bank I'll put in watch list. अगर मिलता है कुछ एंट्री तो will tell you guys. In Petro nothing. CTC, CUB, BPCL. Done guys, done for today, done for this week webinar. Please trade the way we discussed. Okay, and be smart a bit. Okay, don't over leverage yourself. Take positions only which you can keep. Look at the stop losses, manage your risks properly. That's it. Take care guys, enjoy, and we'll meet now tomorrow. Let's see. Yeah, just go through the webinar once again खुद से, and let me know if there is something you guys don't understand. Okay, thank you. Bye bye.